Good evening, kids. In today's class, we are going to discuss the alternating current JEE main previous year questions 2023 January shift. And there are around 12 questions are there. They are based on the basic concepts and the formulas. So once again, the prerequisite means what are the like read concepts, revise all concepts. Then memorize all formulas. Then solve PYQ. Okay, these are the three important things which you have to apply. There's no other choice. Then without revising concepts, you can't manage with the formula. Because once you have the clarity of concepts, sir, concept बोले तो क्या है यहाँ पे क्या करना है concept में तो जो भी theory है like register, what do you mean by RMS क्या है RMS current बोले तो क्या है what do you mean by average current RC circuit, RL circuit, RLC circuit, pure resistor, pure inductor, capacitor कनेक्ट किए तो AC सोर्स में करंट एंड वोल्टेज पावर डिसिपेशन क्या क्या रिलेशनशिप है एंड सीरीज रेजोनेंस बाकी दिस इज थ्योरी एक घंटा आप तुम रिवाइज करे तो भी ओके फाइन गुड देन कम्स फॉर्मूलास ऑल द चैप्टर्स यू नो आपको पता है लेके कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो कॉन्सेप्ट्स है देखिए बहुत डेरिवेशंस लंबे रहते हैं वो सबको तुम डिराइव एग्जाम में डिराइव नहीं कर सकते अगर तुम फॉर्मूला याद रहे तो easily you can tackle the questions. So these are the things. Next again, if you solve PYQ, आपको पता हो exactly you'll get idea. तो like किस लेवल का प्रिपरेशन मुझे करना चाहिए. So without solving PYQ, आप प्रिपेयर कर रहे हो, then again it's a really problematic. हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 100 या 150 क्वेश्चन करीब करीब आप तुम 50-60 कर लिए तो भी ओके फाइन गुड नो इन द प्रेजेंट सिचुएशन इससे पहले कर चुके ओके फाइन गुड लेट मी स्टार्ट दिस क्वेश्चन एन एलसीआर सीरीज सर्क्यूट यहाँ पे कैपेसिटेंस है एक रेजिस्टेंस सीरीज सर्क्यूट में और उसको एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी 2 किलो कनेक्ट कर चुके हैं करंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फ्लो हो रहा है देन इज आस्किंग उसका इंडक्टेंस वैल्यू कितना है आई थिंक वी कैन ड्रॉ द सर्क्यूट रेजिस्टर इंडक्टर ए कैपेसिटर एसी सोर्स जैसे कैपेसिटर इंडक्टर और ए रेजिस्टर है across resistor current and voltage they are in phase across inductor current lags the voltage so current यहाँ पे same phase में रहेगा और inductor will have phase angle of 90 degree across the capacitor current leads the voltage some small correction across the inductor current lags the voltage across the capacitor current leads the voltage okay there's a phasor diagram so what do you mean by lead lag means voltage when it is high the current will be low there's a meaning of this one when current is high voltage will be low there's a meaning and voltage and current both what happen will be same there's a meaning of that particular phase angle okay now he's asking आपको like इसका वैल्यू पूछ रहे हैं how to calculate that one frequency of this will be how much he has given 2 kilohertz what do you mean by current यहाँ पे maximum बोल रहे हैं तो जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में ये जो करंट फ्लो हो रहा है आरएमएस करंट टू द सर्किट दिस इज मैक्सिमम बोल रहे हैं
So when the current will be maximum at resonance. So if you know the basic graph, resonance का ये जो ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी का सोर्स जब आप इंक्रीज कर रहे हो, तो जब इंक्रीज कर as frequency of source आप इंक्रीज कर रहे हो, करंट इन द सर्किट विल इंक्रीज, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है, फिर बाद में डिक्रीज हो, इट स्टार्ट डिक्रीजिंग, डिक्रीज होते जाता है, एंड एट वन फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी एट विच करंट इज मैक्सिमम, उसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. ओके फाइन. इसका वैल्यू कितना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है, दैट्स व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी f not equal to 1 by 2 pi LC. f not का वैल्यू कितना है, 2 kilos 2000, 1 by 2 pi. L value we have to calculate, 62.5 into 10 to the power of minus 9. Squaring 4 into 10 to the power of 6, 4 into pi square, 1 by सॉल्विंग दिस आपको L का वैल्यू मिल जाएगा. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए बस. At resonant frequency, current will be maximum, and this maximum current is what flowing. Okay, done. There's a basic concept. At resonance, current will be maximum. What is the idea of this problem? At resonance, current will be maximum. There's a basic idea. इस आइडिया के ऊपर ही एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं. एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको तो पता है, 1 by 2 pi under root of LC. We'll take the next question. A series LC is connected to AC source. The circuit contains a resistance R equal to 80 ohm, an inductor of inductive reactance. A series LCR circuit is connected to an AC source. The circuit contains a resistance, inductor of inductive reactance, and capacitor of capacitive reactance. The power factor of circuit. वही सेम सीरीज रेजिस्टर, यहाँ पे इंडक्टर और एक कैपेसिटर, तीनों हम सीरीज में across the source we are connecting series. So sir, what do you mean by series? In series, current will be same. The current will have zero phase. There's a current, a voltage. There's a current, this one. So यहाँ पे आप फेजर डायग्राम अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, एक करंट का जीरो फेज हो गया, दिस विल बिकम BL, और ए हो गया आपका BC. Then if you rearrange this, if you rearrange this one, this will become, and VRMS, let it be यहाँ पे, this is VRMS. So this voltage triangle, and this will be VR. What is VR? Drop across resistance. What is VRMS? Applied voltage. What is I or IRMS? Both are same. यहाँ से आप VR, VL minus VC, VL greater than VC, let's assume that VL minus VC. Then this will become
VRMS. This is the voltage triangle. From voltage triangle, apply the Ohm's law. VRMS equal to kitna? Equal to IRMS into Z. Ohm's law across resistor, IRMS into R. This I only IRMS, the symbol we are rewriting it. VL equal to IRMS XL. VC equal to IRMS into XC. Substituting this and solving, यहाँ पे हमको impedance triangle मिल जाएगा. इसी को क्या बोलते हैं हम? This one is impedance triangle. अगर आपको voltage पता है, if you know the drop, अगर आपको VR, VL, VC का information है तो then use this particular voltage triangle. अगर आपको impedance triangle, impedance के बारे में पता है, so we know impedance is XL, XC and R. Then use impedance triangle. I'm giving idea. If you know, अगर क्वेश्चन में वोल्टेज के बारे में कुछ डेटा है तो इन रजिस्टर इंस्टेड ऑफ रजिस्टर, अगर वोल्टेज अक्रॉस ड्रॉ रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दिए तो use voltage triangle to calculate power factor. What they're given reactance and resistance. So we'll use impedance triangle. So what is the power factor formula? Cos phi is equal to VR by VRMS. Impedance triangle में power factor is equal to R by mod of Z. What is it? Total impedance of circuit. X square XL minus XC whole square. R का वैल्यू कितना है? 80. R square 80 square. XL minus XC 70 minus 130 whole square. 80 under root of 80 square. So this will be 130 minus 70. 60 square. Solving आपको power factor will become x by 10 will be 8 by 10. It will come 80 6400 3600 will get 80 by 100. Okay, this one solving आपको under root का value 100 मिलेगा. So this will become 8 by 10. This is our answer. ओके फाइन. यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा है? अगर इम्पिडेंस डेटा रहे तो यूज दिस पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए इम्पिडेंस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर लो. अगर आपको वोल्टेज के बारे में डेटा दिए तो देन वोल्टेज ट्रायंगल यूज कर लो. टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम. For the given figures, choose the correct option. यहाँ पे आपको only pure resistive circuit is there. is a pure resistor. रजिस्टर के अलावा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे रजिस्टर और एक सोर्स भी कनेक्ट कर चुके हैं. यहाँ पे इंडक्टर कैपेसिटर कुछ भी नहीं. तो यहाँ तो आपको प्योर रजिस्टर मिलेगा. दिस इज RLC circuit series. The RMS current in the options directly same ना. आप वोल्टेज देख लीजिए 220 वोल्ट RMS. यहाँ पे भी 220 RMS सेम फ्रीक्वेंसी. करंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं यहाँ पे. सो इज आस्किंग अबाउट दिस करंट I1 and I2 and what is this RMS करंट. RMS करंट के बारे में पूछ रहे हैं. कंपैरिजन के बारे में पूछ रहे हैं.
First we'll look at the option. What we know, हमें क्या पता है, like what is the in the first figure A circuit में what is our IRMS current? I1 equal to VRMS value, VRMS by R, 220 by 40, 11 by 2, 5.5 ampere. Then what about I2? I2 is equal to VRMS by is asking R square plus XL minus XC whole square. I mean, we don't know XL and XC. Comparison 40 ohm, and we have to check the resonance. Agar at resonance only, what will happen at XL equal to XC, how much I2 equal to? I2 will become equal to VRMS by R. Means at resonance, यहाँ पे अगर resonance हो रहा है बोले तो then RMS का करंट वैल्यू कितना होता है, कितना हो जाता है? VRMS by R. इस फिगर ए सर्क्यूट में या फिगर ए में द आरएमएस करंट वैल्यू कितना हो जाता है? 220 by 40, 5.5 ampere. At resonance only this is possible. At resonance we are writing. No, कैलकुलेट कर लेंगे. सो कितना वैल्यू हो गया आपको? 5.5. और स्ट्रिक्टली एट रेजोनेंस. The resonance means what should be the frequency? Frequency of the circuit should be equal to 1 by 2 pi LC. Circuit, is it in resonance is what we have to check it. पहले हम resonant frequency calculate कर लेंगे. L value 50 into 10 to the power of minus 3 or a 0.5 into 10 to the power of minus 6. ये हो गया आपका 10 to the power of 10, 10 to the power of 5 आउटसाइड हो रहेगा. बाकी रूट में 250 5 बाहर आ जाएगा. तो 255 10 10 to the power of minus 5, 10 pi into 10 to the power of minus 5 root 10. तो इसका वैल्यू 10 to the power of यहाँ पे 1000, 10,000 pi root 10. Pi also approximately, pi is 3.14. Root 10 is what? Approximately we can write it as 3. Pi as 3 है. 3 का वैल्यू 3.4 है. रूट 10 का वैल्यू भी करीब करीब अराउंड 3. Let me calculate. Root 10 3.16. 3.14 into 3.16 will be 9.92. Approximately इसको हम 10 कर देंगे. Then how much resonant frequency? Resonant frequency का वैल्यू हुआ now कितना हुआ? 1000 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी का सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज. देन आप व्हाट इज द कंक्लूजन? कब करंट मैक्सिमम रहेगा? करंट विल बी मैक्सिमम ओनली एट रेजोनेंस. एंड ये मैक्सिमम करंट कितना 5.5. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट कितना? f0 1000 हर्ट्ज. बट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स? 50. सो हम जो 50 बात कर रहे हैं, it will come somewhere here. It will come up, आपको यहाँ पे में हो जाएगा. So then what is the current here? यहाँ पे जो current flow हो रहा है, this will be less than that 5.5 ampere, and this is the value of I2. Maximum current is what? 5.5 ampere. At 50 years,
What is the current flowing? Will be very less. This will, at resonance, this current will flow. At any other frequency other than resonant frequency, the current flowing in the circuit will be less than 5.5 ampere. This value. बाकी अदर फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी का सोर्स अदर देन 50 रहेगा, अदर देन 1000 रहे, 1000 है, तब कितना करंट विल बी लेस देन 5.5 एम्पियर. So what we can write here now? Choose the correct options पूछ रहे हैं. At resonance, current in B is less than that in A. Wrong, no. At resonance, current in the circuit B and A will be equal. These are wrong. The RMS current in circuit can be larger than that in A. Not possible, no. At resonance only maximum current कितना होगा? 5.5. So this is not possible. The RMS current in figure is always equal to that in figure B, no. At resonance only, current in the figure A will become equal to current in the figure B. यहाँ पे तो आपको RMS 5.5, यहाँ पे कितना? At resonance only it will be 5.5. Other than resonance, less than 0.5, 5.5. Okay, then the RMS current in the circuit B can never be larger than. Maximum current in the figure B is possible is 5.5. इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है. So I think this is the one possible option what you can pick up. This is wrong, and this is wrong. He is asking very simplified way. He's asking comparison. एक प्योर रेजिस्टर का, एक आरसी सीरीज रेजोनेंस का कंपैरिजन, करंट के बारे में कंपैरिजन पूछ रहे हैं. We'll take the next question. Then यहाँ पे an inductor of inductance 2 microhenry is connected in series with a resistance, variable capacitance and AC source of frequency. The value of capacitance for which maximum current is drawn in the circuit. 2 microhenry inductor with a resistance, and यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर मिलेगा. Okay, fine. 2 microhenry. रेजिस्टेंस का वैल्यू पता नहीं, कैपेसिटेंस का वैल्यू पूछ रहे हैं कितना फैरेड में. देन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स गिवन कितना? 7000 हर्ट्ज. देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर फॉर विच करंट इज ड्रॉन इनटू सर्किट. यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है, दिस करंट इज आरएमएस करंट. दिस आरएमएस करंट शुड बी मैक्सिमम. व्हाट कंडीशन he has put at resonance, a series resonance का curve, IRMS, and this is the resonant frequency or a frequency of source. Frequency of source का कितना value है? 7 kilohertz. Now a capacitance का value, we can adjust the value of capacitance. इसका कैपेसिटिव वैल्यू चेंज करने पर, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्क्यूट becomes equal to frequency of source, then resonance will occur. At resonance what happen? There will be a maximum current. ये जो current flow हो रहा है, this will become maximum. And when do this will become maximum? Here, at resonance. And what is the condition for resonance to occur? At resonance, XL equal to XC. What is the value of XC? XC का value omega L है. XC का value 1 by omega C. So this will become omega square equal to LC.
and this will be, we know omega equal to 2 pi hai, 1 by 2 pi under root of LC. Then when the frequency of circuit becomes equal to resonance frequency, then resonance occurs. So what is the frequency of source? 7000. 1 by 2 pi. L ka value 2 into 10 to the power of minus 6. Capacitance is what we have to calculate. Okay, now we'll square it up. 7 square into 10 to the power of 6 is equal to 1 by 4 pi square by 2 into 10 to the power of minus 6 into C. थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस आपको यहाँ पर 10 to the power of 6 या 10 to the power of 6 दोनों कैंसिल हो जाते हैं. देन यहाँ पे आपको 7 स्क्वायर into 4 into pi square 22 by 7 whole square. Capacitance value 1 by 7 square 4 square 22 by 7 whole square into 2. Solving 1 by x value. This everything will become 3872 farad. What is the concept, sir? What is the concept? Concept to at resonance, inductive reactance must be equal and opposite to capacitive reactance. When the net reactance should be 0, so then only what happens, the current will be maximum. We'll take the next question. In a series LR circuit, XL equal to R, power factor is P1. If a capacitor of capacitance C with XC equal to XL is added to circuit, the power factor becomes P2. The ratio of that. LR circuit draw कर लेंगे पहले. This is the resistance. This is the inductance. AC source यहाँ पे हम कनेक्ट कर चुके हैं. Inductance का reactance XL है, and this is R and VRMS. Added to the circuit. यहाँ पे तुम little bit careful से पढ़ना है. A capacitor of capacitance with X equal to XL is added to circuit. The power factor. दूसरा circuit बना लेंगे. This is a resistor, inductor. एक capacitor series में connect करते हैं हम. Resistor, inductor, capacitor. इसका वैल्यू कितना है? XL, this is XC and this is R. Power factor, and what is the condition given? XL equal to R. What is the power factor? Directly यहाँ पे आप impedance triangle draw करो. R, XL, this is Z1. Then XL equal to XC. So what is the value of, यहाँ पे आपको tan phi1 equal to cos phi1. Power factor formula is cos phi1 equal to R by Z1. R. What is Z1? The impedance of this circuit will be root of R square plus XC square. Sorry, XL square. XL equal to R. There's a condition given. So this will become R root 2. So this will become R root 2. 1 by root 2. Pi 1 equal to, this will become pi, only cos phi 1. He is asking cos phi 1 value. Then यहाँ पे will draw the impedance triangle. A series RLC circuit का impedance triangle draw कर लेंगे. This will be XL minus XC. इसका value resistance R है. The phase angle of circuit pi 2.
and let the impedance iska bhi Z2. But what is the condition given? XL equal to XC. This idea is very, very important. Then we'll write down Z2 is equal to impedance of RLC circuit का R square plus XL minus XC whole square. This is the impedance of the series RLC circuit. And this is the impedance of the RL circuit. Okay, agreed. Huh? Then RL square. What is the condition given? XL equal to XC. So bracket में तो 0 हो जाएगा. But this X equal to XC is given. Substituting XL equal to XC here, the bracket term will become 0. Then this will become only R impedance का. Then what is the power factor? Second diagram में, second impedance triangle में, यहाँ पे कितना power factor? Cos phi equal to adjacent by hypotenuse. So R by Z2, R by R. इसका तो power factor 1 है, यहाँ पे तो 1 by 2 है. The ratio of P1 by P2. Power factor becomes P2. So cos phi 1, cos phi 2, 1 by 2 by 1. Power factor is indicating this symbol P1 and this is P2. Power factor becomes P2. Power factor is P1. You should not get confused. यहाँ पे confused मत नहीं होना. P1 means not average power dissipated. Power factor तो E is instead of calling cos phi 1 इसको एक symbol दे रहा है P1. P1 यहाँ पे is not average power dissipated. Power factor का एक symbol define कर चुके हैं P1. यूजुअली हम क्या कि लाइक एसी सर्किट्स में पावर बोले तो पी से इंडिकेट करते हैं. पावर फैक्टर को एक सिंबल डिफाइन कर चुके हैं P1. इन द फर्स्ट सर्किट पावर फैक्टर इज P1. सेकंड सर्किट पावर फैक्टर इज P2. लिटिल बिट बच्चे यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं. तो P1 मींस एवरेज पावर डिसिपेटेड. नो, P1 मींस हियर पावर फैक्टर इज चेंजिंग सिंबल. यूजुअली पावर बोले तो वी गो फॉर एवरेज पावर. No, यहाँ पे power बोले तो is telling P1 means cos phi 1. Got the idea? Little bit alert. I think is confusing through symbols here. Little bit very good question. Is asking about the RL circuit and RLC circuit comparison. So, see, in every AC circuit, what you have to draw? First, draw this particular phasor diagram. After drawing that, so what you can do? You can try these things. Current and voltage. They'll be in phase across resistor. Across inductor, current lags the voltage. Since they are in series, current यहाँ पे same phase रहना चाहिए. यहाँ पे current का कितना है? Magnitude is high, 0 phase. Then as they are in series, current should be same. It should have same phase and same magnitude. So therefore, we are assuming current of I and phase angle 0. And across inductor, current lags the voltage. So therefore, VL leads the current. Across the inductor, again, you can draw the same similar diagrams. I, VR. Then here will be I, VL. This will be I and this is BC. Across inductor, current lags the voltage or voltage leads the current. Across the capacitor, current leads the voltage. And across the resistor, current and voltage will be in phase. This is about the phasor diagram. From phasor diagram, voltage triangle. From voltage triangle, impedance triangle. From impedance triangle, you can find out the impedance. You can find out the power factor. We'll take the next question. In the given circuit, RMS value of current through the resistor R. यहाँ पे कितना current flow हो रहा है? Is asking you to calculate RMS current.
तो हमें तो यहाँ पे आरएमएस वोल्टेज सोर्स का भी दे दिया दिया है, एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर। सर हाउ टू, कहां से शुरू करना है? यू हैव टू गो बैक टू द कॉन्सेप्ट। यू हैव टू गो बैक टू द कॉन्सेप्ट, देन इम्पिडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करो तुम। इफ यू ड्रॉ द इम्पिडेंस ट्रायंगल, आपको ए तो जेड, दिस विल बी एक्सएल माइनस एक्सी। करंट के बारे में पूछ रहे हैं हम। देन वी नो आरएमएस, then if you apply the Ohm's law for a circuit, Vrms equal to Irms into Z. This is the Ohm's law for the total circuit. Ohm's law across resistor, Irms into R. Ohm's law across inductor, Irms into XL. Ohm's law across capacitor, Irms into XC. Now what is asking? Only this RMS value. And we know VRMS. VRMS कितना है? 200 root 2. अब हम impedance find out करेंगे. Then we'll get the IRMS value. Then how to calculate the impedance? Directly from this triangle. What is Z equal to? R square plus XL minus XC whole square. Shall I tell you one simple trick here? In AC circuit, all are vectors. There's a very beautiful way in AC circuit. All quantities must be treated as a phasor. Phasor means will have magnitude and direction. This is called direction ही what we are calling this direction को ही हम यहाँ पे phase बोल रहे हैं. Okay, fine. Mechanics में this direction we diffuse by angle. Here they have some definite angles, not arbitrary angle between 0 to 360 degrees. That particular angle, what we'll call phase. So even the current, voltage, resistance, impedance, inductance, everything you have to treat like a vector, and you are doing this vector addition. Got it idea? There's one trick. You can't write यहाँ पे आप VRMS, VR, VL. How they are? They are again the voltages. Again, you have to take the vector sum of voltages. Since they are series, current will be same, and vector sum of the impedances. Okay, fine. यहाँ पे हम calculate करेंगे R का value 100 square, XL minus XC 200 minus 100 whole square. So 100 root 2 इसका impedance हो गया. Then we'll substitute in this formula. इस formula में substitute करेंगे. VRMS 200 root 2. Impedance का value कितना है? Impedance calculated 102. And the Z is IRMS हमें calculate करना है. Impedance value कितना calculate कर चुके हम? 100 root 2. So IRMS is equal to 2 ampere. This is our answer. This is a golden thing in AC circuit. All quantities must be treated as a phasor. Phasor means, loosely speaking, vectors. Vector addition of resistance, reactance, impedance. Vector addition of voltages. Parallel में vector addition of currents. This is one basic funda which you have to observe. These things is what you have to observe. Okay, fine. Next question. In an AC generator, rectangular coil of 1000 turns. Rectangular coil बोल रहे हैं. Okay, this will be the rectangular coil. बहुत सारे around 1000 turns. मैं कुछ 2 3 4 5 दिखा रहा हूँ. इसका एरिया
डिफाइन कर रहे हैं 14 into 10 is rotated, इसका 100 टर्न्स है, तो what is the value of number of turns? 1000. Area value 14 into 10 to power of -2 meter square, rotated about an axis perpendicular to uniform magnetic field. Perpendicular to uniform magnetic field. यहाँ पे मैं I'll show the axis. This is the axis. Will rotate. Look at this value, rotated at 360 revolutions per minute. RPM वैल्यू कितना? RPM दे चुके हैं. इसको will simplify it. Omega equal to 360 RPM. 1 revolution 2 pi. 1 minute 2 pi radian. 1 minute is 60 seconds. So this will become 12 pi radians per second. I think थोड़ा ये यूनिट आपको अलर्ट रहना चाहिए. If they give RPM, इसको आप रेडियंस में कन्वर्ट करके then you can use it in formula. Agreed? Then magnetic field का वैल्यू कितना है? 3 Tesla. What is the formula for what is the flux linking? Flux linking equal to BS cos theta NBS. Differentiating this d phi by dt NBS cos theta, इसको further up will simplify it. NBS cos omega t. So this will become NBS omega sin omega t. Cos omega t. Differentiation of cos omega t will become minus of sin omega t. Then how we define EMF? Minus d phi by dt. This will become NBS omega sin omega t. क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ प्रोड्यूस. दिस इज द ईएमएफ प्रोड्यूस. इसका मैक्सिमम वैल्यू दिस वन. सो इफ यू फर्दर सिंप्लीफाई दिस, ओके एग्री दिस दिस द कॉइल ई मैक्स. ई मैक्स का वैल्यू कितना? NBS ओमेगा. नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N 1000. B का वैल्यू 3. एरिया 14 into 10 to power of -2. And omega value is 12 into pi. Pi का value, so this will be यहाँ पे आपको 1030 14 मिलेगा. 10 to power of -2 here 100. You will get cancel out 12 and 22 by 7. Calculate कर लो, आपको करीब करीब around 1584 approximate will get answer. So this is some AC generation. There's a coil. When you rotate this coil about this axis, flux linking the coil changes. Rate of change of flux will be EMF induced, and it will vary sinusoidally. And this will be the maximum value. So यहाँ पे maximum value NBS omega. Number of turns magnetic field, area of cross section of coil, and omega. The symbol A or S. S is area of cross section. सर यहाँ पे एरिया बोले तो दिस टोटल एरिया ऑफ द कॉइल. Okay, done. Then next question: an alternating voltage source is connected across a pure inductor. Pure inductor. Okay, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे इंडक्टर सर्क्यूट. दिस इज अ सोर्स. सोर्स का सिग्नल वैल्यू कितना है? 260 साइन ऑफ 628t. इंडक्टर का वैल्यू 5 मिली एम्पियर. प्योर इंडक्टर इसमें आपको रजिस्टर या कैपेसिटर कुछ भी नहीं रहता है, ओनली इंडक्टर. इसको हम प्योर इंडक्टर बोलते हैं.
इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं. What is the inductive reactance? XL should be equal to, what is the value? XL should be equal to omega L. Omega कहाँ पे है omega? This, if you rewrite V naught sin omega t, this omega is 628. L value कितना है? 5 मिली एम्पियर. 628. 628 is what, like 2 into 314 into 5 into 10 to the power of a minus 3, और इसको तुम 3.14 into 5 10 to the power of minus 2, 5 into 10 to the power of minus 3, 10 to the power of minus 2, 10 to the power of plus 2. 314 को 3.14 लिख के you can bring 10 square, 10 square, 10 to the power of minus 3, 5 2 will cancel out, we'll get 3.14. सिंपल है. आपको यहाँ यहीं पे थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए ना. So what is the 628? 628 is what? Omega. Agreed? This 628 is what? The omega. The angular frequency of the circuit. And this is a maximum value. The inductive reactance is equal to omega. Sir, inductive reactance, what it will do? ये क्या करता है ऐसा? Like, it will control the flow of current and it will make the current to lag the voltage by 90 degree. Then what about IRMS? Can you calculate IRMS? VRMS by XL. VRMS value कितना है? 260 by root 2. XL value we have calculated 3.14. Then you can calculate even IRMS. What about the average power dissipated? 0. What is the inductor? It's a storing element. It will not dissipate power. Huh? Sir, dissipate बोले तो this is a storing element. यहाँ से source से energy लेके it will convert into magnetic energy. Again it will return back. Resistor वैसा नहीं. Resistor what happen? It will dissipate. It will take energy and it will not return back. Inductor what happen? यहाँ से energy लेके फिर return कर देता है. So this is called like a average power dissipated is 0. Small idea, sir. Okay, I'll take the next question. A series LCR circuit contains R, XL, and XC. The input voltage is given. The amplitude of current in the circuit. Series RLC circuit, inductor, capacitor, resistor, capacitor और inductor. यहाँ पे हम AC source given, इसका maximum value Vs equal to 2500 cos of 100 pi t. R का वैल्यू 80 ओम है. कैपेसिटेंस का XC वैल्यू दे चुके हैं, X इक्वल टू 40 ओम. XL का वैल्यू 100 ओम. यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट. एम्पलीट्यूड बोले तो क्या है? इज आस्किंग अबाउट द मैक्सिमम करंट. What we can calculate? We can calculate IRMS or directly, you know maximum voltage, then you can calculate directly the maximum current. I think थोड़ा बहुत confusion रहेगा यहाँ पे. So sometimes maximum current at resonance, that is different. That is the maximum value of IRMS. Here यहाँ पे amplitude of current पूछ रहे हैं. So we have to get this IRMS value. Then बाद में उसका
amplitude value will calculate. Then what is the formula? The general formula will be IRMS equal to VRMS by R square plus XL minus XC whole square. IRMS we can define like this, IM by root 2. VRMS का वैल्यू कितना है? VM by root 2 whole divided by R square का वैल्यू R 80 square XL 100 minus 40 whole square. Root 2 get cancels, under root 2 ये दोनों cancel हो जाएंगे. So this IM is what we should calculate. VM, sir, what is VM? You can rewrite इस equation को cos, आपको यहाँ omega means 100 pi, VM means 2500. So हमें VM value पता है, that is given is 2500. यहाँ पे लगा दो तुम 2500. Under root का value 80 square, 100 minus 40, 60 square. So 2500. So this will be, I think, 10 square. Hundred will come. Root of 80 square plus 80 square will be 100. Then 0 निकाल देने पर this current will be 25 ampere. You should not get confused. Even at resonance, हमें पता है कि like current will be maximum. ये वाला करंट IRMS का मैक्सिमम रहता है यहाँ पे. ओके फाइन सर, लगे कहीं ये तो नहीं पूछ रहा है दिस मैक्सिमम करंट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड? नो, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट. अगर इसके बारे में पूछ रहे बोले तो देन यू विल कॉल इट एज मैक्सिमम करंट इन द सर्क्यूट. आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस इज देयर, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एंड मैक्सिमम करंट. मैक्सिमम करंट इन द सर्क्यूट व्हेन इट विल अकर, जब सर्क्यूट रेजोनेंस में हो, मींस frequency of source equal to resonant frequency of circuit, then the current here will be maximum. The RMS value of current will be maximum. He's asking this amplitude. This is called like an amplitude. Better not call this as maximum current, call this as amplitude of current. Terminology. In books, I think they never called this as maximum current. They called amplitude only. If you calculate IRMS, then its amplitude will be IM by 2 or I naught by root 2. We have some simple math, the following one. Math the list one में क्या है? AC generator. AC generator works on what? Electromagnetic induction. Fine. AC generator में what is AC generator? AC generator में आपको कॉइल रहेगा, कॉइल रेक्टेंगुलर और सर्कुलर. इसको हम घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, अगर घुमाए तो इसको, एंड यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड, देन EMF विल बी इंड्यूस्ड एंड इसको E नॉट sin omega t. Flux linking the coil equal to BS cos omega t. Differentiating this minus NBS, differentiating this NBS omega minus sin omega t. This minus है. Then इसको E equal to minus d phi by dt, Faraday's law. Then NBS omega
Fine. This is about the generation. No? What is this? This is a Faraday's law. The concept based on electromagnetic induction. EMI is what we'll call. So AC generation कैसे होता है कि like if you take the coil and if you rotate in a magnetic field, then only EMF will be generated. Okay, fine. हम ये कर लेंगे. This is the then transformer. Transformer आपको पता है like it works on the inductor, mutual inductance. यहाँ पे आपको प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पे हम वोल्टेज लगा देंगे, प्राइमरी वोल्टेज और एंड प्राइमरी करंट. यहाँ पे आपको सेकेंडरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी करंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस will occur. A varying flux flowing in the a varying current flowing in the primary will induce current in the secondary. So some sort of mutual inductance will take place between the coils. So therefore, the basic idea of the transformer is what? Mutual inductance. Transformer, mutual inductance. Then resonance phenomena to occur. What do you mean by resonance? Resonance ka, I'll write it EMI. In series circuit only the resonance will take place. XC, this is XL, this is R, and at resonance current will be maximum. Then for condition, XL must be equal to XC. What is XC? Omega L, and this is omega C. अगर इंडक्टर कैपेसिटर दोनों सर्किट में रहे तो ही इट विल बिकम रेजोनेंस. अगर कैपेसिटर नहीं रहेगा देन इट विल बिकम आरएल सर्किट, नो रेजोनेंस. अगर अगर इंडक्टर नहीं रहे तो देन विल बिकम आरसी सर्किट एंड वहां पे रेजोनेंस कुछ फिनोमिना ही नहीं रहेगा. देन रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए? इंडक्टर एंड कैपेसिटर मस्ट, बिना रेजिस्टर भी रेजोनेंस हो जाएगा. बट रेजोनेंस के लिए व्हाट इज द कंपलसरी? इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों रहना चाहिए. बिना रेजिस्टर भी रेजोनेंस सर्किट बन सकता है अगर इंडक्टर कैपेसिटर रहे तो. कंपलसरी क्या है? इंडक्टर कैपेसिटर. आई थिंक विल टेक दिस ऑप्शन. रेजोनेंस फिनोमिना के लिए कंपलसरी इंडक्टर और कैपेसिटर चाहिए. Sharpness of resonance. So this particular thing, जो sharpness है ना, it depends upon like a resistance. Or say what you say, quality factor. Quality factor depends on what? Depends upon R, omega, and L and R and C. This part is deleted. This is not there for present, not there for JEE Main 2025. I'm making things clearer. You need not to bother. Sharpness of resonance. It depends on what, like quality factor. So since not there, no, let's not waste time. But therefore JEE advanced. It is there for JEE Advanced 2025. Okay, done. Next question ले लेंगे. A series LCR circuit is connected to AC source. 220 volt. The circuit contains a resistance R and inductor of inductive reactance. The capacitance are needed to maximize the average rate at which energy is supplied. What is the meaning? Meaning needed to maximize the average rate at which energy is supplied, means power
supplied should be maximum. When power supplied is maximum in a RLC circuit at resonance, this is the inductor, here capacitor, this is the resistor. When source will supply maximum power, 220 volt, 50 hertz. This is a source. XL value, XC का value पता नहीं. R given 1000 ohm. The capacitance of capacitor is asking C value. But हमें कितना में what are the values given? XL value given. कितना 79.6 ohm. When there will be maximum transfer of energy at resonance? At resonance, the power dissipated in the circuit will be maximum. And this is resonance. Okay, fine. इसको RMS current indicate कर दो. At resonance, the current will be maximum, and here only the power dissipation maximum. So what is the resonance? The maximum transfer of energy will take place from source to the circuit, and who will accept this maximum energy? The resistor. And for resonance to occur, what is the condition? XL must be equal to XC. Okay, that one. So here XC should be equal to XC. XL का value कितना है? 790.6 ohm. XC value is asking C value. XC will be 1 by omega C. Omega is 2 pi f. 1 by 2, 3.14. फ्रीक्वेंसी कितना दे चुके हैं? कितना दिया है? 50 हर्ट्ज. ये सब्स्टिट्यूट कर लो. So C is equal to 1 by 2 into 3.14 into 50 into 79.6. We have to microfarad में पूछ चुके हैं. If you do calculation, इसका 2 into 3.14 into 50 into 79.6. 24994 करीब करीब आ रहे हैं. 24994.4. इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. This reciprocal का value 0.0040. 4 zeros के बारे में 4 zeros है यहाँ पे. So this will become 40 microfarad. Okay, fine. This is a key. So what's the concept? This is the idea. Question पढ़ते ही, like if this idea flashes for you, this is the basic idea. Fine. This is the idea of the problem. This is a background. अब concept को भी revise करने के बाद ये थोड़ा background concept should be there. Then at resonance, the current will be maximum, and because of maximum current flowing, maximum power dissipation. ये maximum power dissipation across resistor हो रहा है. इसके लिए इसको कौन energy supply कर रहा है? This particular source. This is a background concept. But in exam, with this background concept, you must have this particular at resonance x equal to xl and x equal to 1 by omega c, this basic formula.
Okay, then I'll take next question. Okay, I think okay, we have completed. Okay, kids, like we have discussed the 2023, the January shift. You can see all the basic formulas are there. So what all we have the formulas: XL equal to omega L, inductive reactance 1 by omega C. Then average power dissipated, VRMS, IRMS cos phi. Power factor formula R by Z. Agree this Ohm's law across each element. IRMS into XL, VC equal to IRMS into XC. VRS equal to IRMS into R. देख लो ये सभी formulas हैं and at resonance XL equal to XC and power factor equal to 1. Average power dissipated IRMS square by R. Then we'll dissipate the maximum, we'll dissipate power in the AC circuit, only the resistor. So what do you mean by dissipation? The electrical energy को it will convert into heat energy. That's called it a dissipation. Inductor capacitor वो भी energy ले लेते हैं source में. Then they'll convert into magnetic field and they will return back. तो इसलिए हम इंडक्टर कैपेसिटर को एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स बोलते हैं. So what are inductor capacitor? L and C. They are storing elements. They don't dissipate power. यहाँ पे कौन dissipate करता है? Only the resistor. So then you know Ohm's law. Sure. Then this phi is called as a phase angle of circuit. The best thing is like read this chapter. Read once. Read once instead of spending here and there watching that. No need of any inspiration. किसी का इंस्पिरेशन वीडियो का देखने का जरूरत नहीं. जस्ट वही 1 घंटे टाइम में आप एक चैप्टर पढ़ लो. एटलीस्ट इट विल हेल्प यू टू सॉल्व वन प्रॉब्लम. So stop watching all unnecessary videos which are other than physics, chemistry, maths. Simple rule. It's a golden rule. कौन सा भी टीचर रहने दो, जेई मेंस का जो भी टीचर है पढ़ा रहे, तेरी वॉच कर लो. जो अच्छे से तेरी पढ़ाते हैं तेरी कर लो. तेरी इज इनफ. वहां से तेरी तुम फॉर्मूला इकट्ठे कर लो. प्रीवियस मीन्स जाके तुम कर लेते जाओ बस. दैट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस. Any teacher, either advanced teacher, mains teacher, even the board exam teacher, the one who are teaching the CBSE board or state boards, there is enough. What all they teach theory, that is more than enough for JEE means. Any teacher will teaching all the fundamentals, basics which are there in NCERT book. Listen those teaching, learn from them. उन टीचर से तुम पढ़ लो. बस अपना फॉर्मूला से याद रख लो. जाके जेई मेंस प्रीवियस करो. दिस इज मोर देन इनफ. इससे ज्यादा मैं कुछ एडवाइस दे नहीं सकता हूँ. बिकॉज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन एग्जाम्स. फर्स्ट, reading question. What are the basic ideas? So you should read the question. So first thing is first, what are the essentials for exam? Essentials for JEE means. First, reading question. जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, लिटिल बिट यू हैव टू बी केयरफुल. लैंग्वेज रीडिंग क्वेश्चन में व्हाट ऑल यू हैव टू मेक ऑब्जर्वेशन. लैंग्वेज और नथिंग बट हम keywords we say. Make observation of keywords. The keywords what happen will decide the idea of the problem. Then
which topic it belongs, a question कौन सा topic का है, then what is the idea involved, what formula यहाँ पे तुम लगा सकते हो, what is the unknown thing, क्या find out करना है. I think all these methods are needed. First was reading question and observing keywords. Keywords के बाद में then okay कौन सा chapter का है, कौन सा सब topic का है, then what is the idea involved, what is asking, unknown thing, then next the formula, then high speed calculations, then cross checking. These are the essentials for JEE means. Then जब read करने के बाद तुम्हें पता है ना this topic, then if you are not prepared that topic, you have to say goodbye to the question. And कुछ कुछ फिजिक्स ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पे क्वेश्चन देखते ही आपको टॉपिक का याद आ जाता है. लाइक सपोज थर्मल एक्सपेंशन, क्वेश्चन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करते हैं, सो इमीडिएटली आपको अल्फा, यू नो अल्फा, क्वेश्चन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, सो दिस बिलोंग्स टू थर्मल एक्सपेंशन. अगर यंग्स मॉडुलस दिया तो दिस इलास्टिसिटी. अगर एन मोल्स ऑफ गैस वहां पे इंडिकेट कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स. अगर स्टीफेंस कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट है, देन दिस टॉपिक बिलोंग्स टू रेडिएशन. अगर चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, समथिंग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, capacitance, capacitor circuit, resistor circuit और RC circuit. Atomic physics, find the wavelength, atom. So the question में ही आपको जो टॉपिक, कौन सा टॉपिक को एक क्वेश्चन बिलोंग है बोलकर द डेटा, द कांस्टेंट्स will help you. Okay, fine. So coming okay, next video, okay, we'll discuss in detail what are the methods for JEE means everything. Okay, thank you all of you kids. Yeah, bye. All the best. Do prepare well.